So, this is one very important debate that often catches our attention, but we usually do not focus on it. Now, tell me whether the order of the court should be publicly convincing or the order of the court must be legally sound. इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, क्या उनको ऐसे डिसीजंस देने चाहिए जो पब्लिक को कन्विंस करे, या उनको ऐसे डिसीजंस देने चाहिए जो लॉफुली साउंड हो। कई बार क्या होता है कि जो जजमेंट्स होते हैं कोर्ट के, वो पब्लिकली कन्विंसिंग नहीं होते। फॉर इंस्टेंस, आपने देखा होगा आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बोला और बोला कि इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। अब जो कश्मीर की इंडिपेंडेंस के या कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के फेवर में जो लोग हैं, लार्जली पहली बात तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की कंटिन्यूएशन में अदर देन कश्मीरीज वो कौन है इंडिया में मेन। अब ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस आई एम आस्किंग यू टू फिल्टर आउट कि किस तरह के लोग ज़रा कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को सपोर्ट करते हैं, ज़रा आइडेंटिफाई करिए, तो क्यों करते हैं उसको समझने की कोशिश करिए, बट दैट अगेन बिकम्स अ पॉलिटिकल डिबेट। बट द सुप्रीम कोर्ट हैड वैलिडेटेड द डिसीजन of the government of the parliament in 2019. Okay, it was not very much publicly convincing. If you talk about for that matter, if you talk about the same sex marriage, the supreme court not giving, you can say, the status of marital union to same sex couples and diminishing their right to marry, it was not very much publicly convincing. I mean, most often the youth of this particular country did not accept the judgment. There was a lambasting of the Supreme Court stand and the majority verdict and all that. But whether the order of the court should be publicly convincing, then is it not the case that if the public sentiment is largely favoring a particular accused, अगर मान लीजिए कोई अपराधी है और मान लीजिए किसी अपराधी ने किसी बहुत ही मजबूरी के कारण में एक अपराध किया और जनता यूजली उसको सपोर्ट कर देती है, तो क्या इस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का या किसी भी न्यायालय का फैसला बदल जाना चाहिए? फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने कोई पार्लियामेंटेरियन है, एक मिनिस्टर है जिसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पुराने ज़माने में, पुराने टाइम पे 20 साल पहले बहुत बड़े बड़े हीनस ऑफेंसेस के ऊपर केसेस चल रहे हैं, बट ही समहाउ इन 20 years हैज़ रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ, हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड पार्लियामेंटेरियन। तो पब्लिक तो उसके फेवर में है बिकॉज वो बार बार इलेक्ट हो रहा है। अब वो डर की वजह से वोट करा ले रहा है, चाहे वो अपनी अच्छाई की वजह से वोट करा ले रहा है। लेकिन अगर उसको कॉन्विक्ट बाद में कोर्ट ने मतलब 20 years डाउन द लाइन अगर उसको कॉन्विक्ट कर दिया, तो ये तो पब्लिक सेंटिमेंट के अगेंस्ट चला जाएगा, बिकॉज पब्लिक तो उस पर ट्रस्ट बेस्ट हो कर रही है, बार बार उसको चुन रही है, वोट डाल रही है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सो दिस इज़ द मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और यहाँ पे एक तरफ हमें पता चलता है कि जो लॉ है दैट इज़ नॉट to satisfy what the law public wants. The law of the land is not is motivated by the aspirations of the people, but such an aspiration also should have some reasonability. Just because the public says that something is good, it does not become good. Just because the public says that something is bad, does not become bad. इसका बहुत ही बेसिक्स एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. The basic example of this particular matter is, imagine a rural area where the allocation of houses and the distribution of wells, hand pumps, rivers, land, और फॉर दैट मैटर फार्म्स, खेत, इस तरीके से हुआ है। भारत में बहुत कॉमन है, अगर आप गाँव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तरह के जाति वाले लोग एक तरफ रहते हैं, राइट, और दूसरी पूरा पूरा एक गांव है जो सिंगल होमोजेनस कास्ट से बना हुआ है। अब होमोजेनिटी ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज विथ रिस्पेक्ट टू कास्ट इंडिकेट्स कि वो काफ़ी बैकवर्ड है। अब कोई बोले कि अच्छा, जाति के आधार पे समाज का विभाजन पिछड़ा कैसे हो गया, अगेन उस डिबेट में नहीं जाएंगे, बट इमेजिन करिए एक ऐसा गाँव है और उसमें कोई 17 साल 18 साल का युवक, 17 साल 18 साल की लड़की इंटरकास्ट शादी करना चाहते हैं, और सडनली क्या होता है कि दोनों के परिवारों को पता चल जाता है और लड़की वालों का परिवार लड़के को मार देता है या लड़की को जो झूठे आरोप में फंसा देता है, जेल में डाल देता है। वैसे केस में पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से लॉ या कोर्ट तो बेंड नहीं हो सकता। कॉमन सेंस कहता है कि नहीं कहता है आपका ये। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट द लॉ एंड द कोर्ट्स आर नॉट हेयर टू सब्सक्राइब टू पब्लिक सेंटिमेंट्स लार्जली। उनमें और पार्लियामेंट में कुछ अंतर होना चाहिए।
सो मोस्ट ऑफन ये डिबेट हमारी हमेशा सामने आती रहती है, जहाँ पे हम इसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की स्वाधीनता, उसकी आज़ादी के एंगल से देखते हैं। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा गया कि आर्टिकल 370 में आप थे, आप सेम सेक्स मैरिज में थे, तो आप सेम सेक्स मैरिज को फेवर कर रहे थे, बट बेंच का डिसीजन कुछ और था। तो ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मुझे जो कहना था वो मैंने जजमेंट में कह दिया, मुझे जो कहना है, जो मेरा अपना एज अ जज जो मेरा ओपिनियन है वो उस जजमेंट में है। एज अ पर्सन मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं सोचता हूँ उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जब मैं जज की कुर्सी पे बैठा हूँ, व्हेन आई एम सिटिंग इन द पोजीशन ऑफ द जज, आई हैव टू लार्जली कन्फाइन माई सेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट द लॉ सेज. If there is any possibility that the law will try to accrue a benefit to a particular section of the society, he shall be taking a decision accordingly. But if there are some gaps which needs constant interpretation, then the rule of the majority, including in the bench, prevails. Now, this settles the dust largely, where the Chief Justice of India has stated that the impartiality of the judges is very much important, because a judge cannot be personally invested in the outcome of the judgment. If the judge is personally invested in the outcome of a particular judgment, then largely that judgment is biased and is not legally sound. So, law is not here to satiate a public demand. I mean, just because a law is misused also does not validate this thought process that it should be struck down. It's not like that. Law is here for all. Just because of this, a particular section, set of individuals, set of classified cases are getting affected, that does not mean that the law is bad in letter and spirit. It might be the case that its interpretation, understanding, or implementation by the agencies, there are some gaps in it. But what is the sense of law? The sense of law or the essence of rule of law lies in the fact that the judges should not be personally invested in the outcome of the judgment. And this indicates that the impartiality of the judges is very much material for the independence of the judiciary. And what do we want to keep judiciary independent from? We want to keep judiciary independent from the pressure of the parliament. We want to keep the judiciary independent from the pressure of the executive, that is the government. We also would want to keep the judiciary independent from the pressure of the media or public sentiment en masse. Now, impartiality of the judges and independence of the judiciary goes hand in hand. Now, when it comes into threat, so largely you might have seen the cases of judicial recusal, this particular theory. When a judge says that either he is associated with the party, or he is associated with the victim, or he is associated with the case at presently, or he is one of the accused or a witness in one of the cases, then he cannot be the deciding person. सो जजेस क्या करते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से वो पार्टी से, सब्जेक्ट मैटर से, इशू से दूर से या क्लोजली रिलेटेड अगर होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार इस जजमेंट पे मैं बैठ नहीं सकता. अगेन, जुडिशल रिक्यूजल क्या इंडिकेट करता है? जुडिशल रिक्यूजल यही इंडिकेट करता है कि जजेस आउटकम से खुद को एसोसिएटेड नहीं रखना चाहते पर्सनल कैपेसिटी में. So judicial recusal has the basis in this argument that judges should not be biased, and any slightest possibility of any biasness, even if it is a distant one, is usually avoided. तो जज कहता है मेरी जगह पे किसी और को जज बना दो इस पर्टिकुलर मैटर में. चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट और द इंडिया would be the right person to decide the core, I mean the bench, right? Master of the roster इसीलिए कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को. So this is one of the you can say evidence that says that the impartiality of judges is very much material. Now, the other evidence is the growing debate around the collegium system. Now, what is collegium system? So, collegium system is a body of senior judges who decide उनके रिटायर हो जाने के बाद, उनके चले जाने के बाद, who shall be the next set of judge. Now, definitely some opinion of the president is taken here, but the opinion of the president is not binding on the collegium system. Now, the growing debate with this respect is that the parliamentarians, which means the members of the Lok Sabha, State Legislative Assembly, Rajya Sabha, should have a say as to who shall be the judge in the high courts or the Supreme Courts. Now, again, that is 99th Amendment Act, the striking down of 99th Amendment Act by the Supreme Court itself, calling it ultra vires of the Constitution of India. Nobody has read that judgment so far. But if you will look closely at the judgment, which is very voluminous in nature, you will find that it is all being done to maintain that the Supreme Court should be independent.
And independent from what? Independent from political pressure, from parliament pressure, from the pressure of the executive, from the pressure of the media, or from the pressure of the people in masse. Now, this also indicates that if you look closely, the live streaming of the high courts, just look at the way people are commenting. Just look at the way people are abusing the judge or tarnishing the image of the judiciary. We should try, as a prudent person, as a zimmedar nagrik, we should try to at least respect the institution, if not the person, but at least the institution, right? So this is what is very much material for the people to understand. And please understand that law is not law is meant to protect everyone, but law is not designed in a manner to be understood by all. If everybody was so you can say concerned or motivated towards understanding the law, there would be no crime. There are crimes, there are habitual offenders because they don't fear the law, right? So yes, definitely you do have a right to resent, right to reject, right to criticize, right to point out the gaps that might be there in the judgment. Human error का possibility तो हो ही सकता है. But impartiality of the judges as well as independence of the judiciary is integrally related. So anybody throws a proper question before you. कभी कोई पूछे कि tell me what do you understand by independence of judiciary? What do you understand by recusal of judges? What do you know about collegium system? Remember that we are trying to keep the judiciary independent. As a law student, you have to support this debate. As a lawyer, I have to support this debate. I have to stand with my bench. Being a part of the bar, I do have a sense of duty, solemn duty to stand with the bench, because the integrity of the bench is very much important if you want the trust of the public to be on this noble profession of advocacy. If people will start thinking that these judges are politically motivated, the judgments are largely given to support the majority group, then they will start to lose trust in the legal system. And when they will start to lose the trust in the legal system, they naturally might be starting to lose the trust in on the way advocates, are conducting their profession and whatever it is. So that is what is that is the depth of this that we do not understand. And definitely the public is not bound to understand this. As a student of law, as a person who is going to pursue law, you need to keep on thinking about the instances wherever the high courts and the supreme courts or their decisions are criticized or attacked, right? So that's the jurisprudence area. Now the question is, you should definitely put your own opinions. The largely question was, from where did I start, that the order of the Supreme Court or the order of the courts, whether should be publicly convincing or whether should be legally sound. What do you think? Do tell me in the comment box.